रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 8 वेव्स में लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन से। देखिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स। मतलब प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव्स में क्या फ़र्क है। देखिए बच्चे, ट्रेवलिंग वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन एरिया ऑफ स्पेस टू अनदर। जितने भी हमारे पास ट्रेवलिंग वेव्स होते हैं, वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। दूसरी बात ये है बच्चे कि इन प्रोग्रेसिव वेव ऑल पार्टिकल हैव द सेम एम्पलीट्यूड। प्रोग्रेसिव वेव्स में जितने भी पार्टिकल होते हैं, तमाम का एम्पलीट्यूड सेम होता है। थर्ड पॉइंट ये है कि इन अ ट्रेवलिंग वेव ओनली पॉइंट्स आर वेवलिंग अपार्ट oscillate in phase, so the rest on wavelength oscillate out of phase with the original point. 4 number point है कि a traveling wave can exist freely. 5th point है बच्चे कि traveling waves are characterized by crest and trough. इसके बाद है standing or stationary waves बच्चे, and standing waves there is no net transfer of energy. स्टैंडिंग वेव में ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी नहीं होती, उसी जगह पे इलेक्ट्रॉन या जो भी है पार्टिकल मूव करते हैं। सेकेंड पॉइंट बच्चे, एंड स्टैंडिंग वेव्स पार्टिकल हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड इन अ स्टैंडिंग वेव। थर्ड नंबर पॉइंट है कि ऑल पॉइंट ऑन अ स्टैंडिंग वेव oscillate in phase, so there is no phase difference between vibration of neighboring particle and a standing wave. 4 number point है कि a standing wave is attached to two fixed point. 5th number point है बच्चे कि standing waves are characterized by node and anti-node. इसके बाद बच्चे हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं कि क्लियरली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। देखिए बच्चे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स बोथ आर द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द वेव्स वेयर पार्टिकल ऑफ द मीडियम टेंड टू वाइब्रेट along the direction of propagation of wave, along the direction of wave motion. Point number 2, longitudinal waves can propagate in gases, liquid and solid. Point number 6. Point number 3, longitudinal waves produce along a spring or a slinky, spring, etc. are the example of longitudinal wave. Third number point बच्चे, the distance between the center of two consecutive compression or rarefaction trough is called wavelength. Longitudinal waves cannot be polarized. 5th number point है बच्चे कि longitudinal waves are only mechanical waves. Transfer wave क्या है? In transfer wave, the particle of the medium vibrate in a particular direction to the wave motion. Transfer wave cannot be propagated in a gas or a liquid because there is no mechanism for driving motion perpendicularly to the propagation of wave. The distance between two consecutive crests or trough is called what बच्चे? वेवलेंथ। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? लैम्डा से। 4 नंबर पॉइंट बच्चे, ट्रांसफर वेव एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन। ट्रांसफर वेव may be mechanical or
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड नेचर। 6 पॉइंट है कि वेव्स अलोंग अ स्ट्रिंग, वाटर वेव्स, लाइट वेव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर वेव। उसके बाद बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि हाउ आर बीट्स यूजफुल इन ट्यूनिंग अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे बच्चे हम बीट्स को डिस्कस करेंगे कि बीट्स एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम राइज और फॉल इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स मालूम करते हैं। जब भी बच्चे हम लेबॉर्ट्री में बीट्स को क्रिएट करना चाहे तो इसके लिए हमारे पास 2 ऐसे ट्यूनिंग फोर्क की ज़रूरत होगी जिसकी फ्रिक्वेंसी एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट होगी। सो रीज़न द फिनोमेना ऑफ बीट इज़ यूज इन ट्यूनिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए बच्चे, वी नो दैट द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस per second is equal to the difference between the frequency of 2 sounding bodies. By tuning a musical instrument, we mean to set it to produce a note of desired frequency. For this purpose, we take a standard instrument of known frequency. So the unturned musical instrument and then the standard instrument are sounded together. At first, the number of beats will be produced due to slightly frequency difference between them. As the two notes approach a harmonic relationship, the frequency of beating decreases and eventually becomes zero. So when this happens, the musical instrument will produce the note of desired frequency in a set to be tuned. In this way, beats become useful in tuning a musical instrument. Question number 4, which is short question number 4, discuss करते हैं कि two wave files traveling in opposite direction completely cancel each other. As they pass, what happened to the energy possessed by the wave? इसकी रीज़न ये है बच्चे कि when two wave pulses traveling in opposite direction completely cancel each other as they pass, but their energy remains conserved. Explanation है बच्चे कि when two wave pulses traveling in opposite direction cancel each other, अब अगर हम इस फिगर में देखें तो ये हमारे पास ये 2 वेव्स हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये एक दूसरे के असर को क्या करेगा? कैंसिल करेगा। बट एनर्जी इज कंजर्व। देखिए बच्चे, कंसिडर द डायग्राम इन विच द सुपरपोजिशन ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट पल्सेस इज शोन इन द फिगर। द एनर्जी ऑफ द अपवर्ड एम्पलीट्यूड पल्स ए इज EA हाफ kx², और जो B है वो हमारे पास है बच्चे हाफ kx0². Up is the pulses pass each other and the net, they cancel the effect of each other and the net displacement is 0. So the total energy is EA plus minus EB. तो यहाँ पे अगर हम EA की वैल्यू पुट करें हाफ kx² minus half kx² equal to 0. After crossing each other, each pulses travel along the spring in its own direction. Nothing has happened. So each pulse has its original shape and speed. So thus each pulse maintains its initial energy and a law of conservation of energy is satisfied. Short question number 5, which ये भी वो important है कि what are the condition of constructive and destructive interference? The condition for interference of waves are, the first one which is the source of the waves must be coherent. Coherent का मतलब है which means they emit identical waves with a constant phase difference. दूसरी पॉइंट ये है कि the wave should be a single wavelength. तीसरी पॉइंट ये है बच्ची कि the waves must be travel in a same direction in a same medium. अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बच्ची क्या है?
If crest of one wave falls on the crest of other wave, or trough of one wave falls on the trough of other wave, then they support each other. Such interference is known as constructive interference. अब देखिए बच्चे, फॉर एग्जांपल अगर हम इस फिगर में देखें तो सेम ओरिजिन से दो वेव्स निकले हैं, इसमें क्रेस्ट पे है और ट्रप। मतलब ये कि इन्होंने एक दूसरे को असर को इन्हेंस किया है, इससे रीइंफोर्स बढ़ गया है और साउंड की इंटेंसिटी बढ़ी। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस इज जीरो आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो पाथ डिफरेंस बच्चे हम लिख सकते हैं 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एट्सेट्रा। तो पाथ डिफरेंस के लिए फार्मूला है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस m लैम्डा। अब m यहाँ पे बच्चे शो कर रहा है आर्डर को 0, 1, 2, 3। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इफ crest of one wave falls on the trough of another wave, then they cancel each other. Such interference is known as destructive interference. फिगर में देखिए बच्चे, क्रेस्ट ट्रफ पे आया है और ट्रफ क्रस्ट पे, इन्होंने एक दूसरे के असर को कैंसिल किया है एंड वी सी नो साउंड और लो साउंड। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस इज ऑड इंटीग्रेबल मल्टीपल ऑफ देयर हाफ वेवलेंथ। अब बच्चे पाथ डिफरेंस के लिए हमारे पास फार्मूला है λ/2, 3 λ/2, 5 λ एट्सेट्रा। फार्मूला है बच्चे n प्लस हाफ लैम्डा और m हमारे पास है 0, 1, 2, 3। Question number 7 is a very important question बच्चे for exam. How might one can locate the position of note in anti-note in a vibrating string? देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं। हम जानते हैं कि स्टेशनरी वेव्स कैन बी सेट अप in any bonded medium by the superposition of two train of progressive waves of equal amplitude and frequency traveling with the same speed in opposite direction. So nodes and anti-node can be demonstrated by Mills experiment. अब नोड क्या होते हैं बच्चे? नोड वो पॉइंट होता है जिसका एम्पलीट्यूड 0 होता है, लेकिन उसकी स्ट्रेन और फ्रीक्वेंसी और डिस्प्लेसमेंट, उसका स्ट्रेन मैक्सिमम होता है, प्रेशर मैक्सिमम होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन एंटी नोड बच्चे वो पॉइंट होता है जहाँ पे प्रेशर मिनिमम, स्ट्रेन मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। So can be demonstrated by Mills experiment when stationary waves are produced and the string by means of water electric vibrate. अब इस फिगर में अगर हम देखें तो हमें नोड और एंटी नोड दिखाया है। अब दो नोड के दरमियान बच्चे जो डिस्टेंस है वो है λ/2 और ये क्या है बच्चे? एंटी नोड। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे कि is it possible for an object which is vibrating transversely to produce sound waves? So yes बच्चे, देखिए, it is possible for an object to vibrate transversely and produce sound wave. Explanation देखिए, अगर हम in the string instrument like guitar, rebab and violin, the string vibrate transversely. So this transfer motion of string does work on the surrounding medium air, due to which compression and rarefaction are produced in the medium, which can be heard in the form of what? Sound wave. Question number 8, which is a very important for exam, कि why does a sound wave travel faster in solid than in a gases? देखिए बच्चे, we know that the speed of sound in a material medium is given by v is equal to e by rho. अब यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड दो बातों के पीछे डिपेंड करता है, एक है इंटेंसिटी और दूसरा है वाटर डेंसिटी। तो इन इक्वेशन नंबर 1, E is the elasticity of the medium,
rho is the density of the medium, so it is true that density of solid is greater than density of gases. But elasticity of solid is very greater than elasticity of gases. So in this case, elastic effect of solid is greater on the speed of sound than the density effect. So therefore, the ratio E by rho is much larger for solid than for gases. So hence, the speed of sound is faster and solid than in a gases. Number 9 सुने अच्छी कि why does the speed of sound wave in a gas change with temperature? बहुत important question. देखो बच्चे हम जानते हैं कि the speed of sound in the gas at absolute temperature is given by V is equal to gamma RT divided by M under the root. So V is equal to gamma R divided by M root T root. अब यहाँ पे गेमा आर डिवाइड बाई एम रूट कांस्टेंट है तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट t. तो ये इक्वेशन साबित कर रहा है कि स्पीड और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है. अब इक्वेशन नंबर 2 शोज दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अब बच्चे हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू v नॉट 0.6t. सो इक्वेशन नंबर 3 शोज दैट for 1 degree centigrade change in temperature of medium changes the speed of sound 0.6 meter per second. Hence, the speed of sound wave in a gas changes with temperature. Question number 10 which is बहुत important है कि is it possible for two astronauts to talk directly to one another even if they remove their helmets or no? It is not possible, reason which is for two astronauts to talk directly to one another even if they remove their helmet in space, because ordinary sound waves are longitudinal mechanical waves, so they always require medium for their propagation. So since in space there is no atmospheric pressure gas, so it is not possible for astronauts to talk directly to one another even if they could remove their helmet in space. The only way by which they could be in voice contact should be their electronic communication system. 12 number है बच्चे कि estimate the frequency at which a test tube 15 cm long resonate tube when you blow across the laps. ये भी बहुत important है बच्चे, 2-3 दफ़ा ये क्वेश्चन भी पेपरों में आ चुका है. बहुत इजी है. देखो बच्चे हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब है, ये है क्लोज ट्यूब, एक एंड ओपन है दूसरा क्लोज है, इसका लेंथ है 15 सेंटीमीटर. अब स्पीड ऑफ साउंड है 332 मीटर पर सेकेंड, लेंथ ऑफ द ट्यूब है 15 सेंटीमीटर, फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है. अब हम जानते हैं बच्चे कि लेंथ बराबर होते हैं लैम्डा बाई 4. अब जो ओपन एंड है वो एंटी नोड है और जो क्लोज है वो नोड, तो नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज लैम्डा बाई 4. तो इसी वजह से एल हमारे पास आ गया लैम्डा बाई 4. सो लैम्डा इज इक्वल टू 4L. अब हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सो एफ इज इक्वल टू V बाई लैम्डा. अब अगर इसमें हम वैल्यू पुट करें तो फ्रिक्वेंसी बच्चे हमारे पास आएगी 5.53 हर्ट्ज. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.